Good morning, students. I hope that you all can listen me carefully. Network is a bit unstable, so we might have a bit problem. So you just need to remain connected. So what we are doing grammar, and the chapter of grammar is direct, indirect. We are doing right. I hope so that I'm quite understandable to all of you. Though you just need to see this network is creating a bit problem, but we need to be connected. This is lecture number 2, students, of direct indirect. We did something in the lecture number 1 which was really good. This is a sort of discussion because some of the chapters are deleted from the syllabus of this session. For this session, basically, as I told you in the last lecture, as we discussed, as we shared the information in the last lecture, right? So this is direct indirect lecture number 2. We are here. Let's just start. Rules for changing simple direct speech into indirect speech. Some of the rules are there, children, which we just need to see. Uh, I think all of you can view this. Now the network will remain connected. That's okay. Also, see, students, what we need to see is that the rules of this direct indirect, changing from direct to indirect. Rules in the first one is remove separating commas, comma, inverted commas, and use the connector that. This I told you in the last lecture also कि हम comma को और inverted commas को remove करके connector use करते हैं that, right? In simple sentences. See the example. He said, comma, inverted comma, I work in a shipyard. Inverted comma, close, full stop. So आप जब when you convert this into indirect speech, there you write he said that. That is there by removing this comma and inverted commas. He is used according to the subject of the reporting verb. He worked in a shipyard, and worked is the second form of verb. I told you that the present is changed into past. See the next one. Sheena said, comma, inverted comma, open, my teacher is highly educated. See the this is direct speech. When you convert this into indirect, it goes. Sheena said that her teacher was highly educated. See that is used specifically. This rule is referring that is used here by removing comma and inverted commas. See the next more rule is the reporting verb said becomes told along with the subject and the connector that when it is followed by an object. जब sad के बाद जो है object होता है, when there is an object, then obviously there will be preposition to with it, at with it or on with it. It can be anything, but naturally to आता है, sad to him, sad to me, sad to you. Then this sad to is converted into told. Told में convert हो जाता है और connector that remain रहता है वहां पर. काम्या sad to me,
comma inverted comma open, you have been a great help. So रिपोर्टिंग वर्ब में आपको जो है ऑब्जेक्ट मिलेगा. काम्या said to me means काम्या told me. Said to is converted into told. Tense is not changed, only the verb is changed, right? That I, because you is second person, so the second person of the reported speech is changed according to the object of the reporting verb, and that is me. Me is in objective case, its subjective case will be I. So Kamya told me that I had been a great help. When you get the object in the reporting verb and you have the subject of reported speech second person, that is converted accordingly. See the next sentence. He said to me, I shall go to the party. Comma inverted comma, I shall go to the party. Then what happens there? What will you do? He told me. Said to again changed according to this, that. And then I is first person, then it will be changed according to subject. He told me that he would go to the party. All right, let's see the next one. Changes into reported speech with respect to the tense. Now see students, we will understand the rules according to the tenses. Tenses we have got this present, past and future. 4 part each of one. Then what will we do? Simple present changes into simple past. नाउ यू सी सिंपल प्रेजेंट जो है सिंपल पास्ट में चेंज होता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी. डू डज डिड में चेंज होगा, इज एम आर वॉज वर में चेंज होगा. ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी. नाउ यू सी ही सेड comma inverted comma open, I do not like computers. So what do we find here? Do will be changed. Connected same रहेगा हमारा that. He said that he do change हो गया did में. Did not liked नहीं आएगा students, like आएगा. ये हमें sprint है, इसको सही कर लेना. He did not like computers. So the sentence is he said that he did not like computers. So do को did में change कर दिया, right? अब see they said comma inverted comma open, we love our country inverted comma close full stop. Now see they said that they loved, first form is changed into second form, they loved their country, right? See the next sentence. This was the simple present changes into simple past. Present continuous changes into past continuous. प्रेजेंट के जितने भी टेंस है वो पास्ट के साथ चेंज हो जाएंगे सेम में. देखो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट. चलो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एग्जांपल्स देखते हैं. आई सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन इट इज रेनिंग inverted comma close full stop. I said that it was raining. is mr मैंने बोला चेंज हो जाएगा was वर में. It was raining, right? See the next one. I said she said comma inverted comma open I am not laughing. She said that she was not laughing, right? So m is changed into was, asmr is changed into was. Now see present perfect will change into past perfect. Has have change हो जाएगा हमारा had में. See the rule. She said comma inverted comma open he has finished his work inverted comma close full stop. She said that he is the third person subject will not be changed. He has finished his work will be changed into he had finished his work.
Next is they said, comma, inverted comma open, we have not gone to New York. We have not gone to New York means they said that they had not gone to New York. Had will be used instead of has have. Present perfect continuous changes into past perfect continuous. See the sentence, he said, comma, inverted comma open, I have been studying since 3 o'clock, inverted comma close, full stop. Sentence will be, he said that he had been studying. Again same has been, have been है बच्चों, वो had been में change हो जाएगा. It will become, he had been studying since 3 o'clock. See the next sentence, Radha said it had been raining for 3 days. Then it will be, Radha said that it had been raining. Has की जगह had हो जाएगा. Rest will remain same. Let's go to past tense. अब present के तो सारे past में change हो गए. Past में क्या होता है? Past के जो पहले दो होते हैं, सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस, वो लास्ट के दो के साथ चेंज हो जाते हैं. देखिए कैसे. सिंपल पास्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट. My teacher said to me, you answered correctly. Now the sentence will be, my teacher told me, I taught you this. Said to is changed into told. That my teacher told me that I, you is changed according to the object of the reporting verb me, and me is the object, its subject is I, then I had answered. यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में मिलती है वो चेंज होगी had प्लस थर्ड फॉर्म के साथ. My teacher told me that I had answered correctly. Correctly. He said, comma, inverted comma open, I didn't buy a car. Sentence banega. He said that he, I will change according to subject. He said that he had not bought a car. उसने कार परचेज नहीं की है. Past continuous चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो वो चेंज होगा आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग. सी नाउ, दे सैड दे वर एंजॉयिंग द वेदर. दे सैड दैट दे हैड बीन एंजॉयिंग, यानी कि वॉज वर आईएनजी फॉर्म अगर है तो हैड बीन आईएनजी फॉर्म में चेंज हो जाएगा. ही सैड मोहित वाज लिसनिंग टू द म्यूजिक. So he said that Mohit had been listening to the music. Right, everyone? उसके बाद present perfect remains past perfect. Past perfect remains past perfect means tense does not change. यानी कि past perfect और past perfect continuous tense जो है कभी भी change नहीं होते हैं बच्चों. He said, comma inverted comma open, I had started a business. देखो change नहीं होगा tense में. He said that he had started a business. I said, comma inverted comma open, she had eaten the meal. I said that she had eaten the meal. Let's go to the next. Let's talk about future tense. अब future tense में जो है changes किस तरह से आते हैं. विल और शेल चेंज हो जाते हैं वुड में. राइट. अब वुड को किस तरह से देखो. सिंपल फ्यूचर विल चेंज इनटू वुड. ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा ओपन आई विल स्टडी द बुक कोमा क्लोज इन्वर्टेड कोमा क्लोज फुल स्टॉप. सो सेंटेंस क्या बन गया. ही सैड दैट ही वुड ओपन द ही वुड स्टडी द बुक. विल इज चेंज्ड इनटू वुड. और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जैसे चेंज होते हैं दे विल बी अप्लाइड अकॉर्डिंगली. दे सेड टू मी वी विल सेंड यू गिफ्ट्स इन्वर्टेड कॉमास में. तो इन इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बना. दे टोल्ड मी, सेड टू इज चेंज्ड इनटू टोल्ड.
that they would send me gifts. Future continuous will be changes into would be. Shreya told me him, I will be waiting for you. Shreya told him that she would be waiting for him. Will is changed into would. Very easy. फ्यूचर परफेक्ट में भी सेम है, will को would में चेंज कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा टेंस पार्ट ऑफ व्यू से. He said, comma inverted comma open, I will have finished the work. He said that he would have finished the work. Narayan said, comma inverted comma open, I will have gone. Narayan said that he would have gone. Right, everyone? So see, this is will be changed into would. Rules for changing interrogative sentences into indirect speech. Now you see, अभी तक जो हम लोग कर रहे थे, this was the simple tense और simple sentence. अब हमें करने हैं interrogative sentences को. अब interrogative sentences को जब हम change करते हैं assertive में, हमारे जो connectors होते हैं वो change हो जाते हैं if और whether in place of that as a connector. That की जगह आप क्या use करते हो? If or whether. Remove the question mark while forming the an assertive sentence. और assertive sentence जब हम form कर रहे हैं तो question mark जो है खत्म हो जाता है. The question starting with quotation words like when, why, where, do not use if or whether. जब question WH से शुरू होता है तब हम if और whether नहीं लगाते, WH as it is रहता है. और जब क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो कनेक्टर हम लोग यूज करते हैं if और whether. Right, everyone? See the sentence. She said to me, comma inverted comma open, do you like tea or coffee? In question mark, inverted comma close, full interrogation हो गया. Now you see, sad to is converted into asked क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है. अगर इंक्वायरी लगे तो इंक्वायर्ड. तो पहले हम बात कर रहे हैं आस्क्ड की. सो शी आस्क्ड मी. अब आप यहां पर जब रिमूव करते हो कोमा इन्वर्टेड कोमा को, यू कैन ईदर यूज इफ और वेदर. लेकिन जब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में आपको और लगा मिलता है, और जैसे कि सेंटेंस में लिखा हुआ है वेदर आई लाइक टी और कॉफी, अगर ये और सेंटेंस में लिखा हुआ है तो आपको श्योरली वुड यूज करना है, ना कि इफ. अगर और नहीं लगा हुआ है तो आप दोनों में से कोई भी यूज करो, बोथ आर करेक्ट. लेकिन अगर और लगा हुआ है तो आपको वेदर ही यूज करना पड़ेगा. दिस इज द रूल ऑफ कंजंक्शन. क्योंकि वेदर और का जो है को रिलेशन होता है, दीज आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शंस, इसलिए वेदर ही लगाना पड़ेगा. ओके, सी द नेक्स्ट सेंटेंस. शी सेड टू श्याम, comma inverted comma open, do you have an extra copy? Interrogation mark inverted comma close. So क्या बना? She asked Sham. Said to is changed into asked. और अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन कनेक्टर के यूज पर हमने यूज किया है if he had an extra copy. देखो इन्वर्टेड कॉमा में क्वेश्चन है, लेकिन जब हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, क्वेश्चन खत्म होकर के असर्टिव सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसे. सी द नेक्स्ट सेंटेंस. ही सेड, comma inverted comma open, what is your problem? Interrogation mark inverted comma close. राइट. सो क्या बना? अब यहाँ पर इफ और वेदर यूज किए होंगे, ये एज इट इज सेम रहेगा. He asked me, क्योंकि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, तो जब हमारे पास ये नहीं होता है ऑब्जेक्ट तो हम उसको अज्यूम करते हैं. He asked me what my problem was. देखो योर जो का जो ऑपोजिट जाता है, जब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो वो माई बन गया. तो योर changed into my according to I.
आई का पोजेसिव केस जो है माई होता है. ही आस्क्ड मी व्हाट माय प्रॉब्लम वाज. सो व्हाट जो है एज ए कनेक्टर यूज होगा और सेंटेंस जो है सिंपल हो जाएगा, एंड में फुल स्टॉप लगेगा. See the next sentence. She said, comma inverted comma open. Why are you not coming? Interrogation mark inverted comma close. She said that नहीं आएगा. She asked आएगा. कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें पजल हो जाते हैं. They make mistake and lost their marks. So you write there, she asked me why I was not coming. Full stop. Why I was not coming. Full stop. It is working as a connector of the sentence, not as the question. Next point is rule for changing imperative sentences into indirect. अब imperative होते हैं orders, command और वही request, suggestion, advice. जब ये sentence आएंगे तो हम उनको क्या करते हैं, उन्हीं की फॉर्म में लिख देते हैं. यूज कंजंक्शन टू इंस्टेड ऑफ दैट. हमने पहले स्टार्टिंग में दैट यूज किया था एज ए कनेक्टर, फिर इफ वेदर यूज किया, फिर डब्ल्यू एच के वर्ड व्हाट व्हाई व्हेन, और अब हम यूज करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस में टू. सी द फर्स्ट सेंटेंस, आई सेड टू हरी डोंट प्लक द फ्लावर्स. अब ये ऑर्डर है, सो बन गया सेड टू. देखो भाई ऑर्डर में भी चेंज हो सकता है, रिक्वेस्टेड में भी चेंज हो सकता है, फॉरबिड में भी चेंज हो सकता है, सजेस्टेड, थैंक्ड और एडवाइज्ड. इस तरह से सैड टू को इंपेरेटिव के किसी पार्ट में चेंज करेंगे, वो रिपोर्टेड स्पीच की सेंस के ऊपर डिपेंड करता है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, हाउ वी आर गोइंग टू यूज इट. I said to Hari means I ordered Hari not to pluck the flowers. अब डू कट हो जाएगा क्योंकि सिंपल में जाएगा, तो नॉट के बाद लग गया टू एज ए कनेक्टर. हरी नॉट टू प्लक द फ्लावर्स. प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स गेट आउट ऑफ द ऑफिस. गेट आउट ऑफ द ऑफिस इज इन द इन्वर्टेड कॉमास, तो क्या बनेगा, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स changed into the principal ordered the students to get out of the office. सिर्फ कनेक्टर टू यूज करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके सेंटेंस एज इट इज रहेगा. देयर विल बी नो चेंज इन द सेंटेंस. Now you see in sentences beginning with let, the reporting verb is changed to propose or suggested. जब हम let का यूज करते हैं या तो propose यूज करते हैं या फिर suggest यूज करते हैं. Right everyone, so this one goes like this. He said, comma inverted comma open, let's keep quiet in this matter. Inverted comma close, full stop. So क्या बनेगा, he suggested that we should keep quiet in this matter. अब ये suggestion है, let's keep quiet in this matter. So आपको ना दोगे said का, suggested. He suggested that we should keep. us चेंज हो गया क्योंकि us जो है ऑब्जेक्टिव केस है, us का सब्जेक्टिव केस बनेगा we. He suggested that we should keep quiet in this matter. इस मैटर में हमें चुप रहना चाहिए. Let's go to the next. Rule for changing exclamatory sentences into indirect speech. Now see, आप इसमें या तो exclaimed यूज करते हो या फिर wish, क्योंकि exclamatory sentences होते हैं वो या तो wish को शो करते हैं, exclamation को शो करते हैं. So words such as alas, bravo, oh, wow, wow should be left out in indirect speech. Ram said, comma inverted comma open, alas, I have been ruined. Ram exclaimed with sorrow. अब देखो अलास लग के हमें पता चल गया, और एक्सक्लेमेशन मार्क आफ्टर अलास शोज दैट दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो आप अलास को सेड टू को चेंज कर दोगे एक्सक्लेम्ड में. राम एक्सक्लेम्ड दैट विद सोरो. अलास जो है शोरो को शो करता है अभी बच्चों, दुख को शो करता है, इसलिए आप वहां पर लिखोगे सोरो. राम एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट he had been ruined. I सब्जेक्ट राम के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, बन गया he,
और have चेंज हो गया tense past में had, has have चेंज हो गया had. So he had been ruined. Forms of the verb wish is used if the sentence conveys a wish. Wish, right? She said, comma, inverted comma, open, if I were a bird. कि भाई अगर मैं एक bird होता तो क्या होता? She wished, ये एक इच्छा है. देखो, if I were a bird के भाई अगर मैं bird होता तो इच्छा है ना, तो बन गया she wished to be a bird. ये करेक्ट है. और बनेगा she wished that she were a bird. जब इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे इमेजिनरी सेंटेंस, उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज होती है. was यूज नहीं होगा, ओनली वर यूज होगा. सो इसका टेंस चेंज नहीं होगा, विश वाले का टेंस सेम रहेगा बच्चों. दिस विल नॉट बी चेंज्ड. राइट एवरीवन. सो लेट्स गो टू द समरी ऑफ चेंजेस. कुछ समरी है, आप सभी जो है इन सभी रूल्स को रिवाइज करेंगे घर पर अच्छे से. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी राइट नाउ ऑल्सो. I'll get you chance, or on Monday, Tuesday, whenever we have next lecture, you can have some questioning. Now you see the change of the verb forms: is, am, are, was, were, has, have, had, go, went, did, had में और had third form में plus third form में, was, were, had been में, will, would, shall, should, can, could. First person according to the subject, ठीक है भाई. Second person according to the object. Changed to third person if reporting verb has no object. अगर ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब में तो फिर थर्ड पर्सन को एज अ सब्जेक्ट हम अज्यूम कर लेते हैं. और थर्ड पर्सन रिमेन्स अनचेंज्ड, कोई चेंजेस नहीं आते हैं. नाउ नेक्स्ट इज नाउ देन में चेंज होगा, अगो बिफोर में चेंज होगा, टुडे दैट डे में चेंज होगा, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट. ये सारे आप स्टडी कराओगे चिल्ड्रन. So students, that's enough for today's lecture. If any one of you wants to ask any question, I'm there to help you. Kindly raise your hand if you want to ask any question. I'll help you out.